Good morning, dear children. Preparation of dioxygen in laboratory. So, by heating chlorates, permanganates, or nitrate salts. So, you see the example of here potassium chlorate, thermal decomposition. It is giving us KCl and 3O2. Similarly, thermal decomposition of oxides. Which oxides, beta? The metallic oxides, the metals which are low in electrochemical series, and higher oxides of some metals. Yes, you can see the example. Ag2O will give us Ag, solid, and oxygen. HGO will, after thermal decomposition, it will give Hg, that is liquid in state, and O2. PbO2, solid, it is heated, and it will give us PbO plus O2, और lead 2,4 ऑक्साइड बोलते हैं इसको, Pb3O4 को, है ना, क्योंकि इसमें दो तरह के ऑक्साइड्स हैं, lead 2 ऑक्साइड्स एंड lead 4 ऑक्साइड्स, both are there. So it is known as lead 2,4 oxide. It is heated and it will give us PbO plus O2. So these are the some laboratory method of preparation of dioxygen. Another method of preparation of dioxygen is H2O2, hydrogen peroxide. It easily gives H2O and dioxygen. किसके presence में बेटा? What is the catalyst? MnO2 and finely divided metals. And only MnO2 or finely divided metals. और large scale production क्या है? Electrolysis of H2O gives hydrogen gas at cathode and oxygen gas at anode. So this is the large scale production. And what is the industrial production? Industrial production में बेटा distillation करते हैं, fractional distillation. See how. For industrial production, dioxygen is obtained from air by first carbon को remove करते हैं. First removing the carbon dioxide and water vapor, and then the remaining gases are there present. They are liquefied and then fractionally distilled to give dinitrogen and dioxygen. So ऐसा लिख दो, industrially dioxygen is obtained from air. Right? Then comes properties of dioxygen. Dioxygen is a colorless and odorless gas. We all know that कितना important है dioxygen हमारी life में. So its solubility in water is 3.08 cm cube in 100 cm cube water. 100 cm cube means क्या बेटा? 100 ml water. So 100 ml water में 3.08 cm cube ये dissolve होता है, and that is sufficient for marine and aquatic life to survive. Here I have written also 3.08 ml of oxygen is present in 100 ml. It liquefies at 90 Kelvin and freezes at 55 Kelvin. There are three isotopes of dioxygen, we know them: oxygen 16, 17 and 18. Molecular dioxygen is paramagnetic in nature. If we write, तो 8 to जा 16 बेटा, 16 electrons है, उसको जब हम arrange करते हैं, तो it will be, if you remember in 11th science 4th chapter we have read how to write the molecular orbital electronic configuration. So we used to write dioxygen any 16 electrons we are adjusting. Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. Then 14 से ऊपर है ये नंबर, 8 to 16, so 14 से ऊपर, so sigma 2pz2, pi 2px2, pi 2py2, then pi star 2px1. क्यों? क्योंकि कितने बच गए? 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 and 4 14, तो 1 ही बचा बेटा. So pi star 2p y 1 कर दो, एक ही बचा है. So total 16 हो गए. As we see that all are paired but 2 electrons are unpaired. Therefore, when unpaired electrons are present, then it is known as paramagnetic. It gives the paramagnetic character. Therefore, despite having the even number of electrons, that is 16, O2 is paramagnetic in nature, because when we arrange the molecular orbital electronic configuration, when we have written, we found that 2 electrons are unpaired. ये इस चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड. Except noble metals like silver, gold, platinum
and some noble gases, dioxygen reacts with all metals and non-metals. ठीक है? And the reaction of dioxygen with elements is exothermic. Heat बहुत रिलीज होती है. But कभी कभी क्या होता है बेटा कि to start the reaction with dioxygen of metals elements, some heating is required. क्यों? Because ध्यान में रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इसको ब्रेक करने के लिए द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी हाई. तो सम हीट हैज टू बी प्रोवाइडेड to dissociate this bond, then only dioxygen will start reaction. Okay, so this you have to keep in mind. Here some of the reactions of dioxygen with metals, non-metals and other compounds What are those reactions? First reaction that I am writing, that is it reacts with calcium. So CaO2 will give us CaO, calcium oxide. 2 है तो 2 यहाँ लगाओ, calcium oxide. Second one is aluminium के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? तो Al2O3 बनाएगा. Al plus O2 will give us Al2O3. So 2Al and 3. So 3 2 just 6 कर दे. तो here it will become 4Al. 3O2 किया तो 3 2 just 6. तो यहाँ 2 2 2 just 4. So it is 4Al. 4Al plus 3O2. Third reaction is it reacts with non-metal. ये दोनों metal हैं. non-metal में phosphorus ले लो. P4 plus O2 will give us P4O10. ठीक है, ये नॉन मेटल. देन कार्बन इज ए नॉन मेटल. कार्बन प्लस O2 विल गिव अस CO2 प्लस. ओके, नॉन मेटल कर दिया है, इसको नॉन मेटल कर दो. नॉन मेटल्स. देन फिफ्थ वन with compounds, that is zinc sulfide. Zinc blend भी इसको कहते हैं, zinc sulfide plus O2 will give us zinc oxide plus ऐसे तो SO2 बन जाएगा. ऐसे याद रखने का SO2. So बैलेंस कर दो इसको. Oxygen 2 and 1 3. So it is become, when you will balance it will become 3 2 just 6. So here it is 2. So 2 2 just 4 and 2 6. So 2 Zn 2 sulfur 3 to the 6 oxygen. Correct? Then sixth one is फिर another compound, हाइड्रोकार्बन, मीथेन प्लस O2. कोई भी हाइड्रोकार्बन हो और O2 के साथ रिएक्शन करना हो तो डायरेक्टली बिना देखे CO2 प्लस H2O कर देने का. देन बैलेंस द रिएक्शन. हाइड्रोजन 4 है तो 2 2 H2O, 2 plus 2 4 ऑक्सीजन. कार्बन 1 कार्बन 4 ऑक्सीजन, 4 hydrogen and 2 1 2 4 oxygen. So any hydrocarbon you will react like this. Some compounds are catalytically oxidized. Like examples are catalytic oxidation होता है. तो उसमें आ जाएगा, ये दे दूं बेटा compounds में. Compounds like, ठीक. Then catalytic oxidation. Catalytic oxidation यानी in presence of catalyst oxidation is there. So example is SO2 plus O2 in presence of vanadium pentaoxide. V2O5 को क्या बोलते हैं? Everybody remembers? It is vanadium pentaoxide. It will give us 2SO3. Okay. जिस भी बच्चे को कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 याद है उसको ये स्टेप याद होगी. SO2 plus O2 will in presence of V2O5 it will give us SO3. Then HCl plus O2 in presence of CuCl2 it will give us chlorine gas plus water. ठीक है, 2 करते हैं. 2H2, 2 to the 4 HCl, 4Cl, so 2Cl2, oxygen is balanced. So in this way it is done, catalytic oxidation. Now 2 questions are there in our textbook, that is in text questions. पहले uses बता देते हैं. uses क्या है?
in addition to its importance in normal respiration and combustion. ठीक है. डाइऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग. वेल्डिंग के समय एसिटिलीन गैस के साथ ऑक्सीजन को यूज करते हैं. मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी मेटल्स स्पेशली स्टील. ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स. हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड माउंटेनियरिंग, है ना. अभी तुमने सुना होगा ये कोविड के टाइम में ऑक्सीजन ऑक्सोमीटर लोग घर में रख रहे हैं. ऑक्सोमीटर जो पेशेंट्स होते हैं, तो बाय दैट द ऑक्सीजन इज मेजर्ड. अगर वो कम हो रहा है देन इमीडिएटली डॉक्टर इज कंसल्टेड. द कंबशन ऑफ फ्यूल्स एग्जाम्पल, हाइड्राजीन याद है किसी को, NH2 in liquid oxygen gives tremendous thrust in rockets. So in combustion of fuels also it is used. Questions are there in text questions. First one is which of the following does not react with oxygen directly? So Zn, titanium, platinum, Fe. ठीक है. तो प्लैटिनम इज एन इनर्ट मेटल. रेस्ट अदर रिएक्टिव. तो आंसर क्या लिखेंगे? Zn, टाइटेनियम एंड Fe आर रिएक्टिव, बट टाइटेनियम इज noble metal, so it will not react with oxygen directly. ठीक, easy. Second is complete the reaction. So 7.17 A C2H4 plus O2. I always told you that hydrocarbons हो तो डायरेक्ट CO2 H2O लिख देने का and then balance the reaction. CO2 plus H2O. So carbon, तो 2 carbon, 2 2 जा 4. So here if I write 2 2 जा 4, 2 oxygen and 4 oxygen. So 4 and 2 6, 3 O2 कर दे. तो C2 hydrogen 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 oxygen, 2 2 जा 4 plus 2 6 oxygen. सो हाइड्रोकार्बन बैलेंस करना तो लेफ्ट हैंड गेम है. हाइड्रोकार्बन जब भी देखो तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन हो जाएगा. देन सेकेंड वन इज 4Al plus 3O2. नो नीड टू से Al2O3 विल बी फॉर्म्ड. 4Al है तो 2Al कर दो, 2 3 just 6 ऑक्सीजन. सो इन दिस वे these questions are completed. Tomorrow we will go for another element of the this 16 group. Okay. Meanwhile, you go through this and prepare for the practice exam. Thank you.